मैंने आज तक कभी किसी अमीर ट्रेडर से मैं मिला ही नहीं। म्यूचुअल फंड वाज सपोज्ड टू सिंप्लीफाई योर लाइफ एंड विद द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्शंस द नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स इट हैज़ डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड इट। इन्फ्लेशन को बीट करने का आपके पास केवल तरीका है कि आप इस इक्विटी में पैसा लगाइए। नोबडी राइट्स दैट इट इज़ 1.5 लाख रुपीज़ आईफोन। एवरीबडी सेज इट इज़ 8,300 रुपीज़ पर मंथ। मेरी सबसे बड़ी गलती रही है कि एक बार 2008 में मैंने घबराहट में अपना लगाया हुआ अच्छे फंड में पैसा जब बाजार पूरा धाराशायी हो गया तो मैंने बिल्कुल निचले स्तर पे अपना निवेश बेचा है। Investing is not just about timing the market, but time in the market. This perspective clearly aligns with the philosophy of our guest today. Joining us on Republic Money is Mr. Dhirendra Kumar, the founder of Value Research and a true luminary in the world of mutual funds. For people who are stepping into mutual funds or any kind of investment, it's nearly impossible to have missed any analysis and insights by Mr. Dhirendra Kumar. People call it not just credible but also essential for their money. Welcome, sir. How are you, sir? How are you? Good. Very good, right? Sir, today we will not just talk about numbers and charts, but also about your personal journey. मतलब पैसे की तो होगी ही बात, लेकिन आपके सफ़र के बारे में हमारी ऑडियंस काफ़ी कुछ जानना चाहेगी. Like your challenges, your triumphs, and other lessons you have learned along your way, right? So, can we start with a not so typical question? Yeah, sure. Sir, so basically, people know you as a finance guru. You talk money, you teach money, and your name is synonymous to mutual funds, right? Now, what if I tell you, just imagine a scenario, God forbid, आपके सारे पैसे आज आपसे कोई ले ले, and you're left with only 5,000 rupees. What would you do with that? No, I'll be very, I'll be very surprised. And it will be an biggest disaster for me. Simply because all my gurudom have failed. Because the first principle of making money is to not to lose one that you have. Buffett once said in a very interesting way that there are basically two rules of making money. Don't lose money and don't forget the first one. So I would say that when a lot of people think in terms of building wealth, investing to multiply, investing to grow their money, the most important step in that direction is to not to lose that you have. And risk is far more essential part of it than just multiplying it. It is not about maximizing, it is about optimizing your returns, which is a lesson which I have, which I understood, that you can actually choose to have you can choose to assume different levels of risk with your money, with your savings, with the money that you have in your pocket. Well, there are money which you need in the next 1 hour, the money which you need in the next 1 week, there's the money which you essentially need this month itself. And then there is a part of your money which you are unlikely to need in the foreseeable future, which can be kept and grown. So that has to be dealt with. So if I'm left with 5,000 rupees, I will die of regret that I have failed so miserably that I really won't be able to. लेकिन सर अगर आपके पास 5,000 रुपए हो और आपको कोई बोले कि आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना तो ये तो काफ़ी रईसी होगी, क्योंकि पहला नहीं, अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखिए कि अगर किसी के पास 500 रुपया है और वो 500 रुपया ही बचा पाता है, और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि 500 रुपया ही बचा सकते हैं और वो भी बड़ी मुश्किल से, तो उस 500 रुपये का वो 500 रुपये मुझे लगता है कि आपका सबसे वैल्यूबल पैसा है, और उस पैसे से आपको रिटर्न ऑप्टिमाइज़ ही नहीं करना है, मैक्सिमाइज़ ही नहीं करना है, वो आपके हैबिट फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप 500 रुपये बचाना सीख जाइए और उसको इस तरह से लगाना सीख जाइए, तो इसके 2-3 फ़ायदे हैं जो कि बहुत ही मैजिकल होता है। एक तो जो आदमी बड़ी मुश्किल से 500 रुपये बचाता है, उसके बाद जब साल भर के बाद अगर 6,000 रुपये केवल बचा रह जाता है गुल्लक में डालने की वजह से, लगाने की छोड़ दीजिए, तो उसको अमीर होने का एहसास होता है। जी। अगर आप 500 रुपये बचा रहे हैं और आपके पास 6,000 रुपया है, तो आपको किसी ज़रूरी चीज़ के लिए किसी से उधार नहीं मांगना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा लेसन है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में।
और वो जो आप डिग्निटी डिराइव करते हैं कि हर छोटी चीज़ पे किसी और पे निर्भर करना, उससे आप निकल पाएंगे। फिर जब वो पैसा अगर आपका 6,000 रुपया लगाया हुआ किसी इक्विटी फंड में अगर किसी वजह से, जैसा पिछले 2-3 साल में बाजार रहा है, उस तरह का रहा होता, तो ये 6,000 रुपया बढ़ करके, जब पहली बार मेरी बेटी ने अपना 1,000-2,000 रुपये का SIP शुरू किया और 6-8 महीना इन्वेस्ट करने के बाद उसको पता चला कि ये 2,000 रुपया महीना लगाया हुआ 4 महीने में 8,000 रुपया लगा है, और जब वो 11,000 रुपया हो गया है तो उसका रिएक्शन था कि ये 3,000 रुपये फ्री के बन गए। तो ये जो फ्री के 3,000 रुपये बन गए, क्योंकि आप पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, समय लगाते हैं, और आप अपना समय बेसिकली खर्च कर रहे हैं उस पैसे को कमाने के लिए, या आप अपना लेबर ये लगा रहे हैं। तो ये जो आपका पैसा जब मेहनत करके कमाता है, और वो तो ये जो एहसास है और ये रियलाइजेशन जितनी जल्दी हो जाए, ये मुझे लगता है कि ये एसेंशियल लेसन है। तीसरा चीज़ जो मुझे लगता है कि ये जो लोग बोलते हैं कि मैं पर्सनल फाइनेंस का गुरु हूँ, बचत का हूँ, इन्वेस्टमेंट का हूँ, ये पर्सनल फाइनेंस मैं अगर जियो फिजिक्स के बारे में नहीं जानूँ, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानूँ, केवल मैं वोट दे दूँ तो मेरी जिम्मेवारी हो जाती है। सोच समझ के अगर मैं करता हूँ, हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ नहीं जानूँ तब भी मेरा गुजारा हो जाएगा। अब मैं फिज़िक्स के बारे में नहीं जानूँ, ज्योग्राफी के बारे में नहीं जानूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। ब्रॉडली पता होना चाहिए कि मुझे ऑफिस कैसे पहुँचना है, और ये रास्ता कैसे है, और गूगल मैप्स मेरी मदद करेगा। लेकिन अगर पर्सनल फाइनेंस से ताल्लुक़ सबका पड़ता है, आप अमीर हैं, गरीब हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत गरीब हैं, पर्सनल फाइनेंस से अगर पैसे से आपका ताल्लुक़ सबका ही पड़ना है। और इसलिए मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे लोग जो आज गर्व महसूस करते हैं कि वो पैसे के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं रहते हैं, वो बहुत ही जेनरस हैं, वो बहुत ही पैसे के बारे में कैजुअल हैं, या बहुत बड़े ये शायद ये मुझे लगता है कि ये अच्छी सोच नहीं है। ये पैसा आपके बहुत मेहनत से कमाया हुआ है, बहुत कम दिन आप काम करेंगे और बहुत दिन आपको जीवित रहना है। जिस समय आप काम करेंगे उस समय आपने जीवित रहने वाले फेज़ में जिस समय आप काम नहीं करेंगे उसका भी आपको बंदोबस्त करना है, और बेहतर होगा कि आप इसको बढ़िया से अच्छी तरह बचाएं, अच्छी तरह लगाएं और खूब बढ़ाएं, और ये आपकी जिम्मेवारी है। सर, जैसा आप कह रहे हैं कि पैसे का ताल्लुक तो सबसे होना ही चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि लोगों की सैलरी आने से पहले या सैलरी आने वाले दिन लोग कैलकुलेटर लेकर बैठ जाते हैं कि इतना पैसा हमारा रेंट का, इतना पैसा मैं SIP में डाल रही हूँ, इतना पैसा है मेरे बिजली का, इतना मैं कुक को दूंगी। और ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी 15 तारीख आते आते जो आपका बैंक बैलेंस है वो नेगेटिव में दिखने लगता है। एंड पीपल दोज हु हैव केप्ट मनी इन SIP स्टार्ट रिडीमिंग इट। एंड ये एक फाइनेंशियल साइकिल है हर महीने का। आप क्या कहना चाहेंगे इस हैबिट के लिए, कैसे मैनेज किया जा सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में बहुत चिंतित होना चाहिए, केवल अगर आप शुरू के कई सालों में, क्योंकि ये ना हमारे फाइनेंशियल लाइफ स्पैन में ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है। शुरुआत में आपके खर्चे ढेर सारे होते हैं और आपकी आमदनी कम होती है, तो उस समय अगर आप केवल आदत डाल लेते हैं, अगर आप केवल कॉन्शियस रहते हैं कि आपको बचाना है, आप बचाते हैं, लगाते हैं और फिर निकाल भी लेते हैं, तब भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये शुरुआत में ये आपके आदत डालने वाला फेज़ है। अगर ये आपका हैबिट बन जाता है और आप इसके बारे में कॉन्शियस रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो आपका शुरुआती फेज़ है जिस समय आपके पास साधन कम है, ये बेसिक इकोनॉमिक्स है कि साधन कम है और आपके पास ज़रूरतें ढेर सारी हैं और आप अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं, आप आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, तो ये ठीक है। हाँ, नज़र रखिए, केवल एक चीज़ का लोगों को ख्याल करना चाहिए कि अगर आप किसी दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए आप खर्च कर रहे हैं तो उससे बचिए, क्योंकि जिसको आप इम्प्रेस करने के लिए आप खर्च कर रहे हैं वो आपकी मदद नहीं करेगा जब आपके पास पैसे की ज़रूरत होगी। तो आप कह रहे हैं हैबिट फॉर्मेशन इज़ द फर्स्ट थिंग। हैबिट फॉर्मेशन इज़ द फर्स्ट। राइट। सर, जब हम लोग पैसे की बात कर रहे हैं, we are wanting to invest. Most of our viewers are in young 20s, early 20s. They are very youngsters, just have started working. So the question here is, suppose not everyone is very aware of finance and money. People are very scared of numbers and charts, right? आपको ऐसा कब लगा कि आपको पैसा समझ आता है, और ऐसा कोई मोमेंट था, ऐसा कोई किस्सा जब आपको लगा कि अरे यार मुझे तो ये समझ आता है, मैं तो इससे अपना करियर बना सकता हूँ? Was there any moment, defining moment? There was a defining moment. What happened was, I was graduating in Delhi.
I came and studied in College of Business Studies, and I was studying in a college which was away from the city. It was in a village called Jhilmil Colony near Vivek Vihar, and there wasn't much to do. You just went to your college, came back and spent time. So I was clipping newspapers, and that is when I actually realized that, and then what happened was I was graduating in 1990, and the great Indian boom led by Harshad Mehta was beginning to happen. And that is when the market started steadily going up, and that was the talk of the town. And you were an extremely privileged guy who was reading Economic Times in 1990. Right. And so I became aware of it. Then I became so curious that I started delving deeper into it. And when I started, digging deep, then I realized that some of it is completely baseless. It is violating the basic principles of investing. The information that was available on Indian companies and the state of our Indian market, the architecture of it, was very fragile, was very flimsy. The stockbrokers will not entertain individual investors. The IPO market, everything, was everything was confidence eroding. There was nothing trustworthy in it. So that actually made me curious. I started asking questions. That is when I started learning about mutual fund, that this is something, because then I realized that for an individual investor, for a person wanting to invest in the market, which is a very important thing because that is the only way you can participate in the real economy with your ownership, then that is when I figured that mutual fund is a great thing, but there wasn't any. And they were popular, but they were only government-owned mutual fund. UTI, LIC, GIC, SBI, Can Bank, Indian Bank, PNB, and Bank of India, Bank of Baroda. Right. So there's the Bank of India, eight mutual fund company that existed then, and they were popular, but people had no sense of it. It was being perceived as a speculative thing. People were experiencing market which was in a manner which was very undesirable. So for me, I thought that this gets an opportunity to individuals to to financially empower them in a methodical way, and which is otherwise not accessible to individuals. So that is when I became very curious. I did not, of course, making it a profession, building a business, mounting a business on top of it, based on that wasn't, I could not visualize it and it was impossible to visualize it. Because I became curious and I started, it actually was a hobby to put together information in a tabular format and, trying to make sense of it. What is the price? What is the NAV? NAV is not available. There was no internet. Right. So my primary source of information was writing letters to these fund companies and waiting for the postman. This was a mode of communication. So I was not very sure of the business or anything, but I sure was very confident that I'll be able to learn, and I will be I was able to question some of the seasoned people. Right. That what is going on is not making sense. This thing it is unlikely to be true, and that is why if it is unlikely to be true, then it is unlikely to last very long. Right. So I had, I was too young. I was 20-year-old. So I only had these questions, and then I saw the great boom and the great bust. Then the opening of the Indian economy. So I have seen everything. I've been a witness to all this. Soon thereafter, I had the confidence that if your opinion is rooted in facts, if it is not rooted in opinion for the heck of it, or just loud thinking, then I think you can base your judgment more with greater confidence. Great. But sir, समझ पाना is a different story altogether. पर समझने के बाद execute करना, you were very confident about it, you were curious about it, you wanted to know and you were confident, right? But उसको execute करना, आपने अपना पहला amount कितना markets में कभी invest किया हो अगर, तो आपने पहला अमाउंट कितना लगाया था और किस एज में सर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी? नहीं, मेरा पहला पैसा जो था वो मेरा नहीं था। अच्छा। मैं 20 साल का था, ग्रेजुएट हुआ था, 1990 की बात है। अगस्त के महीने में SBI म्यूचुअल फंड का एक स्कीम आया था,
और उसके पहले कैन बैंक का एक स्कीम आया था जिसका नाम था कैन शेयर, और उसके पहले एक स्कीम आया था कैन ग्रोथ। उन दोनों म्यूचुअल फंड में लोगों का लगाया हुआ पैसा 2-3 साल में 4-5 गुना हो गया था, जिसकी मुझे जानकारी थी। तो ये एक तीसरा और SBI म्यूचुअल फंड का ये पहला इक्विटी फंड था, मैग्नम मल्टीप्लायर स्कीम 1990। ये जब लॉन्च हुआ तो मैं ग्रेजुएट हो रहा था, मैं अपने पेरेंट्स को मैंने परसुएड किया कि आप लोग इसमें पैसा लगाइए, और वो लोग चूँकि थोड़े इम्प्रेस थे कि मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, और बिज़नेस एजुकेशन से मैं आ रहा हूँ, और मैं उसका कुछ आधार उसका था। और मेरा भाई स्टेट बैंक में उस समय नौकरी कर रहा था, उसको भी मैंने परसुएड किया कि वो मेरी मदद करे मेरे पेरेंट्स को समझाने में। तो मेरे पेरेंट्स का जो फिक्स डिपॉजिट था उस समय, उसको तोड़ करके मैग्नम मल्टीप्लायर स्कीम 1990 में लगाया गया, और वो लगाया गया था कि लंबे समय में 2-4-5 साल में वो अच्छा करेगा, क्योंकि इक्विटी में लगाया हुआ है। आमतौर पे मेरे पेरेंट्स जैसे लोग बाज़ार में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, तो ये एक अच्छा ज़रिया था। इस सोच के आधार पे ये पैसा लगाया गया था। लेकिन उसी बीच में एक बहुत अच्छा एक्सीडेंट हुआ है कि भारत में जो ग्रेट इंडियन स्कैम है वो हो गया, और बाज़ार अपना रफ्तार से बढ़ गया। सेंसेक्स हमारा 800 पॉइंट से बढ़ करके 4000 पॉइंट्स पे चला गया 2 साल में। 5 गुना जो बाज़ार हुआ, उसी समय इस फंड में लगाया हुआ पैसा वो भी करीब 2 गुना 2.5 गुना हो गया, उसका NAV जो था। लेकिन बाज़ार में जो पागलपन था, उसकी वजह से जो बाज़ार का जो लिस्टेड प्राइस था ये 10 गुना हो गया, ये बल्कि 16 गुना हो गया। 10 रुपया लगाया हुआ आपका 160 रुपया हो गया। जब मैं ये मेरे पेरेंट्स का पैसा इस रफ्तार से बढ़ गया, तो मैंने अपने पेरेंट्स को फिर बताया कि ये कुछ अनहोनी सा चीज़ हो रहा है, ये टू गुड टू बी ट्रू है, तो इस पैसे को निकाल लेना चाहिए। और उस पैसे को 100 रुपये से 160 रुपये के बीच में बेच करके सारा पैसा, 10 गुना पैसा हो गया या 16 गुना हो गया, धीरे धीरे करके वो पैसा निकाल लिया गया। और हम लोग इतना डरते थे कि हमें विश्वास नहीं था कि ये पैसा जो बेचा जा रहा है वो मिल जाएगा। और उस समय बाज़ार भी अपना बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड था, जो ब्रोकर्स थे वो बहुत भरोसेमंद नहीं थे। वो जो 2-3 लाख रुपए लगा हुआ था, 1-1.5 लाख रुपए लगा हुआ था, मुझे बारीकी से याद नहीं है, लेकिन अच्छा खासा रकम था। वो जो पैसा लगा हुआ था उतना हो जाना, तो हम लोग धीरे धीरे बेच रहे थे ताकि बहुत ज़्यादा पैसा हमारा लेनदारी ब्रोकर से नहीं रहे। तो ये करने के बाद तो ये मेरा पहला ब्रश था, और इसका एक मेरे करियर पे बहुत बड़ा असर हुआ। इसका बड़ा असर ये हुआ कि मेरे पिताजी एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर थे, मेरी माँ एक टीचर थी, और हम लोग एक बड़े वर्किंग क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे, जहाँ पे कारोबार करना उसको बहुत ही सस्पिशियस तरीके से देखा जाता था, या बड़ा अनसर्टेन था कि क्योंकि अगर आप ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जाके एक अच्छी नौकरी कीजिए। तो उसके बजाय मैं कुछ और करने में लग गया था। लेकिन इसके करने का नतीजा ये हुआ कि लोगों को भरोसा हुआ कि ये कुछ काम का बात हो रहा है, या कुछ ढंग का चीज़ किया जा रहा है, या ये कुछ हवा में नहीं है, ये कुछ उटपटांग चीज़ नहीं है। और ये जो, और मेरे लिए उसका एक बहुत डिफरेंट लेसन था। ये तो मेरा जो फैक्ट बेस्ड ओपिनियन या जजमेंट में मेरा अपना विश्वास काफ़ी बन गया। दूसरा चीज़ क्या हुआ कि ये जो बाज़ार के बारे में लोगों की धारणा है कि लोग मज़े के लिए आते हैं, या कुछ एक्साइटिंग चीज़ है, या बाज़ार में कुछ अजीबोगरीब चीज़ होता है, या लोग स्पेकुलेट करते हैं, रैक्स टू रिचेस स्टोरी होता है। इसके बजाय मुझे बाज़ार में काफ़ी अलग तरीके का भरोसा हुआ कि आप अगर बारीकी से सोच समझ के अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपना रिस्क काफ़ी कम कर सकते हैं, आप रिटर्न अपना काफ़ी बढ़ा सकते हैं बिना अनयूजुअल इनऑर्डिनेट रिस्क लिए हुए। और एक इसका दूसरा ये हुआ कि ये जो जानकारी जो मैंने इकट्ठा किया था म्यूचुअल फंड पे, वो जब मैं उसको मैं एक प्रोडक्ट बना पाया और उसको मैं कुछ अखबार कंपनियों को बेच पाया, तो उससे फिर मेरा कारोबार वैल्यू रिसर्च की शुरुआत हो पाई। तो वो काफ़ी एक बड़ा फ़ायदा था। सर, मतलब एज अ किड ओनली यू were taken seriously in your family because you're quite studious and confident. No, because nothing succeeds like success. If you were able to turn, and that was a sheer accident. This was just a matter of chance. It was a fluke. It was just plain and simple lucky. I persuaded based on some framework, based on some premise,
and the money went up by 10 to 16 times, and that was quite magical. I had one more, outcome of this. Everybody, when I was growing up, when I was 20-year-old or 22-year-old, everybody thought that market is some interesting place, sexy place, something exciting. For me, it had a completely different meaning. What happened as a result of this money growing in my family and my parents able to realize it, that for me it was not a game. Right. For me, the understanding was that it makes a difference to people's life. It actually makes a difference to your children's education. It makes a difference to people. A lot of time people look at, well-off people look at money as a game. For me, for most, working class people, money makes hell of a difference, because for the first, till you achieve a basic scale, all your life is centered around money. Your plans, your goals, your aspirations, your dreams. And so, my parents started thinking differently. What my father thought that he will retire, and a couple of years before that he will go and build his house and, plan for my sister's wedding. All those things got accelerated. The kind of freedom that you can derive. So for me, the understanding of having little more than enough, and what you can do with it, what kind of difference it makes to your thinking, that was very meaningful. बट सर, शुरुआत में जब आपने अपने पेरेंट्स को अपने कॉन्फिडेंस में लिया कि मैं आपका पैसा लगाऊंगा यहाँ पे, क्या आपको कोई वार्निंग मिली थी कि अगर पैसा डूबा तो ये कोई कॉन्सिक्वेंस होगा, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी धमकी तो नहीं मिली थी। लेकिन और पेरेंट्स आपको धमकाते नहीं हैं, क्योंकि अगर वो बोलते कि आपको देना भी पड़ेगा तो कहाँ से ले लेंगे, मतलब मेरे पास कुछ था ही नहीं। मैं उनके पास ही जाता कि भाई, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं उनको एक्सप्लेन कर पाया था कि ये क्यों काम करना चाहिए, और कि ऐसा क्या हुआ, और उसके पिछले प्रेसिडेंट्स को मैं उनको एक्सप्लेन कर पाया था। सर, द वर्ल्ड इज अवेयर ऑफ योर सक्सेस, राइट? वर्ल्ड इज अवेयर ऑफ द सक्सेस स्टोरी दैट यू हैव, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसी फेलियर स्टोरी भी है, कोई ऐसी फेलियर स्टोरी जहाँ पे आपने पैसे लगाए और डूब गए, या फिर यू हैड एडवाइज्ड समवन टू पुट मनी समवेयर और वहाँ पैसे उनके डूब गए, और उसके बाद बिकॉज अगर आपके एडवाइस से कोई पैसे बना ले तो शायद वो आपको क्रेडिट ना दे, लेकिन अगर पैसे डूब जाएं आपके एडवाइस के बाद, दे वोंट लेट यू फॉरगेट दैट। ऐसा कोई किस्सा? नहीं, मेरी अपनी ढेर सारी गलतियाँ जो मुझे याद आती हैं, क्योंकि और वो सब मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन रहा है। जैसे मैंने एक बार, आपको शायद ध्यान नहीं हो, इंडिका कार लॉन्च हुई थी, और इंडिका कार में लोग बुकिंग कर रहे थे कि जब बुकिंग आएगा तो लोग बुकिंग बेच देंगे और कुछ प्रीमियम कमाएंगे। और तो मैं और मेरे भाई दोनों ने बुकिंग अप्लाई किया, हमें अलॉटमेंट भी हो गया, और तुरंत नुकसान हो गया, क्योंकि उस पर कोई प्रीमियम मिला नहीं। उसी तरह से आईपीओ में कभी पैसा लगा, और आईपीओ में लगाया गया और पैसा उसमें नुकसान हो गया, क्योंकि उस समय सब लोग लगाते थे। तो वो मतलब ये सब मुझे लगता है कि ये सब मेरे लर्निंग कर्व का पार्ट है। ये सब मेरे लिए सबक रहा है। मेरी सलाह पे लोगों का नुकसान हुआ, ऐसा मुझे ऐसा नहीं हुआ है। उसके कई कारण हैं। एक तो कि मैं म्यूचुअल फंड में मेरी विश्वास काफ़ी स्ट्रांग रही है। मैं लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में सलाह देता हूँ। मैं शेयर्स के बारे में आमतौर पे नहीं, मैं किसी को सलाह नहीं देता जी। और एक आम आदमी को लगाना भी नहीं चाहिए अगर आपके पास भरपूर समय और भरपूर समझ ना हो तो, क्योंकि इन दोनों के अलावा आपका टेम्परामेंट भी होना चाहिए शेयर मार्केट से फ़ायदा उठाने के लिए। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप स्टॉक मार्केट तो कभी रेकमेंड ही नहीं करेंगे अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे भी ना हो, वक्त भी ना हो और समझ भी ना हो, राइट? एंड यू साउंड वेरी बुलिश ऑन म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो। बट जस्ट अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अगर म्यूचुअल फंड्स दुनिया में होते ही नहीं तो ऐसे कौन से दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं विच यू वुड कंसिडर पुटिंग मनी इनटू, और आप एडवाइस भी करेंगे लोगों को? मैं सबसे पहले ना आपको एक बेसिक प्रीमाइस बता दूं अपने सुनने वालों के समझ के लिए कि जब भी आप कभी इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास ब्रॉडली ये दो तरीके का ही चीज़ होता है जिसमें आप पैसा लगाते हैं। या तो आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, आप बैंक को पैसा जब डिपॉजिट करते हैं तो आप उधार दे रहे हैं। आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदते हैं, पीपीएफ में पैसा लगाते हैं तो आप उधार दे रहे हैं भारत सरकार को। तो आप बॉन्ड खरीद रहे हैं तो आप उधार दे रहे हैं। और जब आप उधार दे रहे हैं तो वो आदमी चाहे कितना भी पैसा कमाए आपको वो एक निश्चित ब्याज देगा
और वो साथ में आपको ये भी प्रॉमिस करता है कि कितने समय के बाद आपका पैसा आपको वापस कर देगा। और वो जो ब्याज दर है वो इस बात पे निर्भर करता है कि वो कितना रिस्की बोरोवर है। अगर वो आदमी पैसा लेके भाग सकता है तो आप उससे बहुत ज़्यादा ब्याज मांगेंगे, और अगर वो पैसा लेके नहीं भागेगा, भारत सरकार है, तो आपको वो 7% देता है। या अगर एक मजबूत बैंक है तो वो आपको आपके सेविंग्स खाते पे केवल 3% देता है। लेकिन अगर आपका दोस्त, कई बार आप सुनते होंगे कि कोई आपका दोस्त है, कारोबार कर रहा है, उसको अभी तुरंत पैसे, या आप ये जो छोटे जो क्रेडिट वर्दी बोरोवर नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्याज पे लोगों से पैसा लेते हैं, क्योंकि उनके बारे में भरोसा नहीं है कि ये समय पे पैसा दे देंगे, भले ही उनका इंटेंशन अच्छा हो। दूसरा चीज़ है कि आप ओन करते हैं, आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उसके मालिक हैं, भले ही छोटे से भाग के मालिक हैं, लेकिन आप उसके मालिक हैं। आप मकान खरीदते हैं तो आप उसके मालिक हैं, और उस पर आपको या तो किराया मिलता है या उसका अप्रिसिएशन मिलता है, या आप उस मकान में खुद रह पाते हैं जिस वजह से आपका किराया बचता है। तो आप या तो ओनर होते हैं या आप पैसा उधार देते हैं। ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। कम समय का पैसा आपको मालिकाना हक में नहीं लगाना चाहिए, वो इक्विटी में नहीं लगाना चाहिए, वो शेयर्स में नहीं लगाना चाहिए, वो इक्विटी फंड्स में नहीं लगाना चाहिए। उसका कारण क्या है कि कम समय में बाजार किधर जाएगा इसका आकलन करना असंभव है। अगर कोई बोलता है कि वो ये कर सकता है, कि वो बता पाएगा कि परसों बाजार कहाँ रहेगा या कल कहाँ रहेगा, तो वो ज्योतिष्य है या जादूगर है। ये क्योंकि उसमें कोई साइंस नहीं है। कल किस वजह से बाजार किस दिशा में जाएगा, कहाँ खुलेगा, कहाँ बिकेगा, क्योंकि उसमें अब और ये और मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर के बाजार जुड़ गए हैं। अब कहीं पे कहीं लड़ाई शुरू होती है और कोई निवेशक कहीं से भारत का स्टॉक बेचना शुरू करता है। इस चीज़ का आकलन कर पाना रोज के आधार पर ये इसका आकलन कर पाना और भरोसे से इसको गेस कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप कई साल में हमारा इकोनॉमी बेहतर होगा, हमारी कंपनियां बड़ी होंगी, हमारा कारोबार अच्छा होगा, कौन सी कंपनी तरक्की करेगी, ये मैं 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए मैं इसका आकलन बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन कल क्या होगा ये मैं भरोसे से नहीं कह सकता। इसलिए कम समय का पैसा आपको इक्विटी में नहीं लगाना चाहिए। और ये सारे जरिए हैं, इक्विटी फंड, शेयर्स में पैसा लगाना, और अगर आज म्यूचुअल फंड नहीं होता तो भी आपको लंबे समय का पैसा इक्विटी में ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक अकेला तरीका है जिसमें कि आप महंगाई से जूझ सकते हैं। आपके पैसे का एक बहुत ही सिंपल उद्देश्य है कि आप कमाते हैं, खर्च करते हैं, जो बच जाता है उसको लगाते हैं, जो बच जाता है उसको लगाते हैं। वो पैसा आपको हो सकता है कल चाहिए हो सकता है 1 महीने के बाद चाहिए हो सकता है 3 महीने के बाद चाहिए हो। ये सब पैसा शेयर्स में नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा जो पैसा है वो आपको इक्विटी में लगाना चाहिए। और वो इक्विटी में लगाने का बेसिक प्रीमाइस ये है, इक्विटी क्यों बीट करता है कर पाता है महंगाई को, क्योंकि आप जिस प्रोडक्ट या सर्विसेज के कंपनी को में पैसा लगा रहे हैं, आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, उस कंपनी के बचे रहने के लिए, उस कंपनी के थ्राइव करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए वो कंपनी अपना आमदनी बढ़ा पाती है। और उस आमदनी बढ़ा पाने में एक बड़ा योगदान ये होता है कि वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का महंगाई के साथ अपने दाम बढ़ा पाती है। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा कि 1985 में भारत में मारुति सुजुकी का कार लॉन्च हुआ था, और उस समय मारुति 800 कार 45,000 रुपये का बिकता था। और उसके बाद मारुति 800 का दाम धीरे धीरे बढ़ता गया, और आज उसी मॉडल का जो ऑल्टो जो है वो मारुति 800 का एंट्री बेस लेवल मॉडल है। और वो महंगाई के साथ एडजस्ट करके, अगर आप उस समय के 45,000 को अगर आप एडजस्ट कीजिए महंगाई दर से, तो आज उसका दाम होना चाहिए 8 लाख रुपया। लेकिन आज भी वो कार आपको 3-4 लाख रुपए में उपलब्ध होता है। तो 45,000 से महंगाई के साथ, क्योंकि इस बीच में स्टील का दाम बढ़ा होगा, कुछ इकोनॉमीज़ का स्केल का एडवांटेज मिला होगा, कुछ उनका प्रोडक्शन का इफ़िशियंसी का फ़ायदा मिला होगा, इन सब के बावजूद कंपनी अपने सामान का दाम 45,000 रुपये से 5 लाख रुपए कर पाई है, और लोग उस पर खरीद रहे हैं, और वो आज भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी आज भी है। तो महंगाई के साथ अगर कोई कंपनी बच जाती है और सक्सेसफुल होती है, तो वो महंगाई से बीट कर पाने के लिए, और इस वजह से
कंपनी ज़्यादा कमा पाती है और उस वजह से उस कंपनी का दाम बढ़ता है, स्टॉक मार्केट में उसका प्राइस में वो रिफ्लेक्ट होता है उसके अर्निंग्स कैपेबिलिटी पे। तो इन्फ्लेशन को बीट करने का आपके पास केवल तरीका है कि आप इक्विटी में पैसा लगाइए, बाकी चीज़ों के बारे में। और फिक्स्ड इनकम क्यों इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है? क्योंकि कोई आदमी उधार तभी लेगा जब वो अपने लिए ज़्यादा रिटर्न बनाएगा। अगर मैं एक कारोबार चालू करता हूँ और मुझे कोई आदमी 8% पे अगर उधार देने को तैयार है, तो मैं 8% पे उधार तभी लेना पसंद करूँगा जब मैं वो उस पैसे को लगा के 10, 12, 14% कमा पाऊँगा। अगर मैं उतना कमा पाऊँगा तो फिर किसी को मेरे ओनरशिप लेना चाहिए या उधार देना चाहिए। तो हमेशा ही फिक्स्ड इनकम को इक्विटी बीट करेगा, लेकिन लंबे समय में, 2, 4, 5 साल में। लेकिन और लोगों के लिए लेकिन लोगों के लिए कम समय और ज़्यादा समय कैसे पता चलेगा? अगर मैं हूँ, मोस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स, उन्हें अगर आप ये बताएंगे कि अगर आपको शॉर्ट स्पैन में इतना प्रॉफिट चाहिए या फिर लॉन्ग स्पैन में इतना प्रॉफिट चाहिए, तो वो कैसे कंसिडर करेंगे कि उनके लिए शॉर्ट स्पैन क्या है और लॉन्ग स्पैन क्या है? नहीं, ये आप पे और मुझ पे नहीं निर्भर करता है। मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा ताकि लोग इसको समझ पाएँ। 5 साल से कम का पैसा आपको इक्विटी में नहीं लगाना चाहिए। 5 साल से कम? 5 साल से कम का पैसा नहीं लगाना चाहिए और कई बार ऐसा होता है, लोगों का भरोसा अभी इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले 5 साल में बाजार गिरा ही नहीं है, और गिरा भी है तो बहुत कम समय के लिए गिरा है। तो लोगों को लग रहा है कि बाजार केवल बढ़ता है। बाजार केवल बढ़ता नहीं है। लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि 1992 में जब मैं बता रहा हूँ कि वैल्यू रिसर्च की शुरुआत हुई थी और ग्रेट इंडियन स्कैम, हर्षद मेहता का जो द्वारा लेड वो जो स्कैम था, उस समय जो सेंसेक्स हमारा 4000 पे पहुँचा था, उसके बाद अगले 10 साल तक ऊपर नीचे होता हुआ फिर दोबारा 4000 पे पहुँचा 2004 में। 10 साल तक हमारा सेंसेक्स कहीं गया ही नहीं, ऊपर नीचे होता रहा। उसमें बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ। तो आपको ये अभी पिछले दिनों, पिछले 4-5 साल के निवेशक जो हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। कभी भी किसी ने लगाया हो उसका पैसा केवल बना है, और कुछ समय बीच में अगर गिरा भी है तब भी तुरंत तेज़ी से रिकवर हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाज़ार में गिरावट का दौर नहीं आएगा। बाज़ार में गिरावट का दौर आएगा, कंपनियां बंद होंगी, बहुत सारी कंपनियां दिवालिया होंगी, और ये हमारे बाज़ार का एक अभिन्न भाग है। लेकिन हाँ, मैं जो आपका पहला सवाल था कि अगर म्यूचुअल फंड नहीं होते तो चूंकि कंपनियां बंद होंगी, कंपनियां ऊपर जाएंगी फिर नीचे जाएंगी, इसलिए अगर आज म्यूचुअल फंड नहीं होता तो मैं आपको सलाह देता कि कम से कम 20 कंपनी का स्टॉक खरीदिए। आप अपना म्यूचुअल फंड खुद बना पाएंगे। धीरे धीरे पैसा लगाइए और 20 अलग अलग तरीके की कंपनियों का शेयर खरीदिए। एक कंपनी जो गाड़ी बनाती हो, एक कंपनी जो कपड़ा बनाती हो, एक कंपनी जो टेलीफोन का सर्विस प्रोवाइड करती है, एक कंपनी जो साबुन तेल बनाती है। आप खुद, बिकॉज म्यूचुअल फंड में जो पैसा आप लगाते हैं उसका फ़ायदा क्या है? बड़ी आसानी से आप लगा पाते हैं, तेजी से डाइवर्स। आप 5,000 रुपये लगाते हैं या 500 रुपये लगाते हैं, आप एक साथ 20, 25, 50 कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा है, ये जो कन्वीनियंस का फ़ायदा है, 500 रुपये से कर पाना, और ये जो निश्चिंता है, ये आप, और अगर ये आप लंबे समय का पैसा लगा रहे हैं तो आप खुद ही निश्चिंत हो सकते हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड आज नहीं होते तो मेरी सलाह होती कि आपको 20 कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए, और अगर आप एक साथ 20 कंपनी का शेयर नहीं खरीद सकते हैं तो अगले 20 महीने तक अलग अलग कंपनी का 20 शेयर खरीदिए। ऐसे भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ये आपका अपना म्यूचुअल फंड है। और इसका एक फ़ायदा भी है, इसका एक बड़ा फ़ायदा है कि आपको एक्सपेंस रेशियो नहीं लगेगा। म्यूचुअल फंड चलाने का खर्चा लगता है और वो उस खर्चे से आप बच पाएंगे। हाँ, इसका एक नुकसान है कि म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर इस पर नज़र बनाए रखे हुए है, देखता है कि कोई कंपनी ऐसी कंपनी में पैसा नहीं लगा रहा हो जो पैसा लेके भाग जाएगी, ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहा हो जो कि कंपनी बढ़ेगी। तो इन चीज़ों पे ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा। लेकिन ये भी, अगर आप मोटे तौर पे भी अगर आप देखें कि जिन चीज़ों का आप उपभोग कर रहे हैं वही चीज़ आप मारुति कार चलाते हैं और मारुति का स्टॉक खरीद रहे हैं, तो इस तरह की 15, 20, 25 कंपनी को ढूंढना मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है। सर, अगर आज आप इंटरनेट खोलेंगे तो कोई ना कोई, बल्कि हर कोई आपको आपके पैसे के लिए सलाह दे रहा है। एन नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, सो मेनी टेलीग्राम चैनल्स एडवाइजिंग फॉर योर मनी, योर सेविंग्स, योर इन्वेस्टमेंट। इससे मुझे याद आ रहा है, मेरा भाई है 12 साल का, ही वंस कॉल्ड मी
and asked me to send money. Didi, send me money. I will trade and I will make you rich, right? So not just because, not just for a 12-year-old kid, obviously, but for someone who is like in early 20s like me, for someone, a young audience base that we have. What would be your one big advice? अमीर बनने के लिए, क्योंकि अमीर सबको बनना है. To create wealth, to be rich. What is that one thing that you would say? There are two bits to it. One is that if you want to get rich quickly, I may not be able to strike a chord with you, but I would still attempt. I will still try. One is that, you know, if you have 10,000 rupees to spend or 10,000 rupees to invest, do two things. One is follow my advice. Do one SIP. Right. And if you want to be extremely venturesome, do a SIP in a stock, in one stock that you like. But do it with a 5-year time frame, or do it with a 3-year time frame, or do it for next 12 months. Half your money, do it like this. Next, the other half, you do whatever you want to. Have your fun allocation. Have your risk allocation. About money issues, I have a theory, I have a principle, that you don't learn from other people's mistake. You have to lose your own money and give it a try. If I actually, you know, forbid you from doing it, you are not going to follow me anyway. And second is that, you know, do it early. Do it in your 20s. Do it, enable your brother to do it with his 5,000 rupees. Because it is very important for him to learn the hard way. Right. You don't, about money issues, my principle is, my understanding is that you don't learn from other people's mistake. Right. You have to lose your own money. Second is that earlier you lose, the cheaper it is. Right. If you do it 10 years later, if you do it 20 years later, when you have something meaningful to lose, right, it will be a massive blow. Right, right. But sir, आज मेरे पास ये चांस है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और सुन रही हूँ, ऑडियंस देख रही है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, those who are, you know, following those Telegram channels, बहुत सारे influencers हैं, हर कोई, there are a lot of noise of advices. Do you think everyone is rich? Everyone is rich जो वहाँ पे बात कर रहा है? No, they are fooling each other. And you know, I'll tell you, if somebody has somebody has insights, somebody has the capability, right, and somebody has the understanding, right, I don't think he will have time to run a Telegram channel. Yes. That's one. Yes. Second is that, you know, we are living in a very noisy world. We are living in a noisy world where a lot of ulterior motives are at work. I think, you know, when it comes to money issues, there are two principles, right, which one should always remember. One is that it is too good to be true. It probably is, you know. This is something which everybody should remember. And second is that, you know, whenever when it comes to entrusting your money to somebody, your default state should not be to trust him. Your default state should be to distrust him. That you are giving the money and he'll run away with it. And somebody has to then clarify that why he will not run away. Will he go to jail? Is he regulated? What will he do with the money? Because nobody, and it is your responsibility. It is extremely important for everybody to worry about his money and look at everything with suspicion. Because nobody cares about your money more than you do. Right. And so even if I say something, you have every reason to be suspicious of it and ask question, because nobody else loses anything. Nobody has any skin in the business when it comes to, you know, giving advice. So just don't follow them. Okay. Sir, but the whole point here is, what if a lazy Gen Z asks you that, itna kya padhna hai? If an expert can tell me like 5 top funds, Google पे जाके जो top 5 funds है, सिर्फ उसी पे पैसा क्यों नहीं लगाया जा सकता है? What would you say? I would say do it. Make sure that you're doing it for 12 months. Because the magic will happen. You know, there is nothing which succeeds like experiencing something. Right. And if you do 1,000 rupee SIP in any fund which you like, even the funds which I dislike,
Right. Even the funds which I think I should not, one should not be investing to begin with, because I'll be starting with a conservative framework that, you are the first time investor, do this, do that. If you do your SIP for 12 months or 18 months or 3 years, you are unlikely to be a loser. You will, and then you will be able to, mutual fund is such a beautiful thing. It is a machinery, it is a mechanism of converting your small savings into a meaningful capital. With your 500 rupee, in 3 years' time, you will be able to accumulate 18,000 rupees. One is the magic of accumulating 500 rupees into 18,000 rupees itself is magical. Then if it is growing at 12%, 15%, it just compounds there. So the magic of compounding coupled with accumulation does all the magic. And once you have experienced it, all you have to do is, ask questions and don't get too greedy. Right. You will actually be disappointed. But sir, as you always emphasize on habit building first, experience it first, even if it's for losing money. Can you explain mutual funds in like very easy terms for our viewers on this platform? Yeah, in fact, in the context of the previous question, I explained it, but I'll explain it in this context of your question. That investing for the long run, you should invest in equity because that holds the biggest promise of beating inflation and beating fixed income. I explained you with the example. So if you have to do it, and if there is no mutual fund, I was telling you that diversify, buy 20 of them, buy 15 of them, and buy it for a couple of years. Mutual fund is exactly that. You are basically, when you invest 1,000 rupee in a mutual fund, you are buying 20 stocks, you are buying 25 stocks, and basically you are entrusting your money to somebody who is buying those 20 stocks. You are getting ownership in those 20 stocks. So this is what a mutual fund is. Now there are many kind of mutual fund. Right. One is a mutual fund which is investing in shares. There is a mutual fund which is investing in bonds. There is a mutual fund which is investing in shares as well as bonds called hybrid funds. Right. Then there is a fund which is investing in shares of different companies, big companies, mid-sized companies, small companies. Then there is a fund which is investing in tiny companies based on the premise that small companies get bigger and they generate greater return. But they are also very risky. Right. They also, are unable to withstand the cyclicality of an economic cycle and, they wither away. So in that sense, you are able to diversify well. And then there are funds which invest good part of it in India, a small part of it abroad. Right. Then there are funds which invest abroad only. For example, we know that, we have a Google account and we watch YouTube and we use an Apple phone and we use a Honda car. And these are businesses which are not domiciled in India. Right. But these are businesses which are globally successful. These are businesses with great advantages. They are growing very rapidly. These businesses are very difficult to replicate. They have some distinct competitive advantage. We all have grown up using computers with Windows and Microsoft Excel and Bing and this and that. So how do you buy these companies? So you buy a fund which invests in these companies. Right. A NASDAQ 100 is one such fund, and there are many such options available. So if mutual fund has become a little complicated. Simplify it, just buy any that you like and do your SIP and do it for 12 months, ideally for 36 months, and everything will be taken care of because there is nothing which works better than demonstration and demonstration to your benefit. But sir, for someone who is just starting out, it's very overwhelming to know that there are large cap funds, mid cap funds, small cap funds, as you just explained, equity, debt, hybrid and everything. अगर किसी को बस चुनना ही है कि पहले 3 funds, I'm not even asking the names, I'm asking for the type, what would you say? ये मेरे बताने से लोग मानेंगे नहीं। लेकिन मैं एक आपको मैं प्रिंसिपल आंसर दे देता हूँ जो कि बुजुर्ग लोगों के लिए बड़ा यूजफुल होगा। जी। अगर आप 35-40 साल के हैं और कभी आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है और जब आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने गए तो you were saying that the large cap fund, as if there are a handful of them, they are not handful of them. There are 16 kind of open-end equity funds, and there are equal number of open-end bond funds, liquid fund, short-term debt fund, gilt fund, that fund, short-term, dynamic bond fund, and things like that. They all have, very nuanced differentiation.
Besides that, there are hundreds of index funds available of different kind. So it is certainly, overwhelming. It is very difficult for individuals to relate to where to invest. It's a wild world when it comes to. But so is the case if you actually go to a superstore to buy shampoo. There is a problem of plenty. You will dry scalp, this scalp, that scalp, shiny one, with conditioner, with not. So, you will be overwhelmed even with a variety of that. But principally, there are 3-4 things which you can actually focus on. If there is a 40-year-old person, I would suggest him who has never invested, he has only done his deposits, he is very scared of the market. He should start with for his long-term money, he should start with an aggressive hybrid fund. Okay. That is for an older person. But for the younger person, he can well go with a multi-cap fund or even a small cap fund. Because even a small cap fund, if you do for 3 years, you can't lose money. It will turn out to be very rewarding. And it will also match with your temperament. Because if I tell this aggressive hybrid fund to a 20-year-old person, it is extremely boring for him. And my whole intention is that somebody should get used to it, somebody should get initiated. The cost of getting started, or the reward of getting started is enormous. And earlier you start, you will get great time to compound it. So in that sense, and there are funds, interesting funds which are investing abroad. People are used to the Googles of the world and the Microsoft and Honda car and Apple phone, but how do you buy their company stock? Right. And here's the fund which is investing in those companies. Right. So they make it easy for you to invest in those companies with such ease, convenience, which is unthinkable. But sir, isn't it very overwhelming because itne sare options? It is, right. And this is something which the mutual fund was supposed to simplify your life. Right. And with the problem of options, the right. number of alternatives, it has definitely complicated it. But most investors can overcome this. That is true for most walks of our life. If you sit in front of a television, you have problem of plenty. Where to stop, where to what to choose. Likewise, buying a shampoo in a store, you will have wide array and wide price range, wide price point, and benefits. Likewise for mutual fund. But if you are really very clear about some very basics, money for the long run, diversification, choose one multi-cap fund or a flexi-cap fund, and that is it. You don't need any. If you are a conservative investor, you want one fund, choose an aggressive hybrid fund. If you are 40-year-old, never invested in your money in any market-linked things, and you want to invest for a couple of years, do your SIP, and you are very uncomfortable with the market free fall whenever you see that market went down by 8%, 10%, and if you lose your sleep, start with that aggressive hybrid fund. It will not really give you a massive blow. So start with that, or start with a diversified fund, or start with a conservative fund, a fund which is little bit into equity, substantially into fixed income, and that will help you beat inflation by a wide margin. Right. And this will not be as volatile as the market, where it goes up. COVID, March 2020, market went down by 30% in 3 weeks flat. That was unnerving. People were running for cover, and that is what most investors are not prepared for. We have, most of us in the last 5 years have seen the good times, and those are the funds, those are the conservative funds which are geared for the bad times as well. So what would you say on the concept of small case, जहाँ पे basket of stocks हैं and someone is advising and पैसे कब लगाने हैं, कब निकाल लेने हैं? Is it similar to mutual funds, different, and if it's different, which one is safer for us? There are two. They are somewhat similar to mutual fund, but they are not mutual fund. Right. One is that mutual fund, the other advantage is that there are two advantages of mutual fund, which I think is not in small case. One is that mutual funds are very intensely regulated. Mutual funds are supposed to calculate their NAV every day. Right. If somebody messes up a little bit, SEBI will get after them. Not only get after them, if somebody has really badly messes up, those people will land in jail. And there are people who have landed in jail.
There are people who have tried to do front running and they have been slapped huge penalties, and and this happened 10 years back, 15 years back, 20 years back. So mutual fund is heavily regulated, intensely regulated, because there is public money at play. And SEBI, in fact, there is one success story, regulatory success story, which in India, it is mutual fund, where we don't, the safety of mutual fund, all the money that comes from you will be invested in your name if it is coming from your account. If you write me a check for a mutual fund, the money cannot be invested in my name. Likewise, the reversal of that, if a money is invested in a mutual fund, the money will be redeemed and the proceeds will come only in your bank account if you have invested. It cannot go to any other person unless you have mortgaged it or some such thing, which means you're authorizing it. So the regulatory framework for mutual fund is very intense. There is no such thing for small case. They are regulated entities. They are the people who are offering small case, either they are RIAs or they are research analysts, but they don't have, if somebody is, they are not as intensely regulated. Nobody is, they are supposed to comply with many rules, but you don't have much of a say. Second is that, mutual fund is an extremely tax efficient vehicle. Right. You put your 5 lakh rupees in a mutual fund, the fund manager is buying and selling every day. Right. You are not liable for any taxes. But if you put your 5 lakh rupees and you buy and sell every day like a fund manager, all your gains will be translated into short-term gains and long-term gains, and you will be liable for taxes. So when you invest in a mutual fund, you are not liable for any taxes, and the fund manager is also not liable for any taxes till you realize that money. So if your money is held for 1 year and more, whatever be the short-term gains component of your investment, that will also be treated as long-term gains. So your money invested in mutual fund is tax deferred till you realize it. So if you invest your money and don't take it out for 20 years, you are not liable to pay taxes. Only on realization of that, on the long-term gains, you will be levied 12.5% capital gains tax, which is so in small case, all the buy and sell transaction will translate into gains, and that you will be liable for. So tax efficiency and intensity of regulation is what matters. Third is the convenience. In small case, you have to act. A small case is a set of information from a RIA or a research analyst. Right. You still have to buy it from a broker based on what you see in the small case. Right. In case of mutual fund, you put your money and the money is at work. Right. Sir, so a small case is not a mutual fund. It's not a mutual fund, and it's not even as safe as mutual fund is. No, it has all the risks of equity market. Right. But you have to act. In case of a mutual fund, you put your money and the money is invested. In case of small case, you have to go and invest yourself with a stockbroker. Right. You only get this piece of information. Right. Also the tax efficiency. Of course, all that and the tax efficiency. Yes. Sir, diversification is a word that every expert is talking about. But जो इंसान अपनी early ages of work में है, उनको डाइवर्सिफिकेशन भी काफ़ी ओवरवेलमिंग लगता है, राइट? बिकॉज उनके पास इतना पैसा नहीं है कि हर जगह लगाया जा सके. एक बार रिपब्लिक मनी पे वी गॉट अ मैसेज एंड अ पर्सन वाज आस्किंग कि मेरी सैलरी बहुत कम है, मैं कैसे डिसाइड करूं कि इतना पैसा कहाँ लगाना है और उतना पैसा कहाँ लगाना है, मतलब कितनी मेरी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, या फिर मतलब मैं किस उम्र के पड़ाव पे ऐसे पहुँचूँ कि मैं थोड़ा पैसा रियल इस्टेट में भी लगा सकूँ, थोड़ा गोल्ड पे भी लगा सकूँ, थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में भी और थोड़ा इक्विटीज़ में, स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली भी हो. इज़ देयर एनी फॉर्मेट लाइक दैट? देयर इज़ नो फॉर्मूला. Yeah. One is that, money, right. Scale of money, personal finance, your aspirations, your dreams, your financial goals, they are so individual. Somebody could be very happy with 500 rupees surplus if it helps you buy the book which you are aspiring to buy for many months. Right. That could be a joy. So different people will have different goals, aspirations. So personal finance makes it very unique to every individual. But I would like to urge that don't bother about the scale. The beauty of personal finance is that it can be customized to your personal needs, your personal scale. If you have 500 rupees which you can save today, do your SIP. If you have, once this is taken care of, right. Because initial months it is habit formation.
Then at a later stage, you'll be able to do larger amount. Then you will have the down payment for a house. Then you will be able, if you do this, then other things will fall in place. Don't do too much don't over-engineer your personal finances. For your short-term money, make sure that you leave that money lying in your savings bank account if you don't want to complicate it. That is also good enough, because the money which you need to consume in next 2 months, 2 weeks, 3 weeks, 3 months, if it is lying in bank account, it is still simple. Keeping it simple, believing in it, is the most important thing, and forming habits which will be long-term benefit, which will benefit you, which will help you accumulate something very sizable over a period of time, and that will get you, financial independence in your lifetime. Right. Is most important, and I think this can be achieved with a small sum of money, and over a period of time with your rising income. I think it's very important for youngsters to focus on their career. Right. That is something which will generate enough capital for you to save, to invest, to put it to work. Right. I think there are only two things. Focus on earning initially. Make sure that you are putting it productively, and make sure that you are not spending your future income. You are not unnecessarily borrowing Right. for stuff which you may not need. Just think a little bit before you impulsively spend, because the spending avenues are just too many. Today, when you go to buy a 1.5 lakh rupees iPhone, what you get on the shop is actually, nobody writes that it is 1.5 lakh rupees iPhone. Everybody says it is 8,300 rupees per month. You don't know whether this liability is going to be for 3 years, for 5 years. Right. You don't get a sense of it. Just be little numerate. Understand what you are buying into, what you are getting into, and is it really worth it? And it is, many times it might be worth it. If you are buying a car and that car actually helps you do your job better, Right. if you helps you feel more confident of yourself, by all means go ahead with it. Make sure that it is within your framework of finances. Spend, borrow, do it wisely, do it thoughtfully. Don't do it thoughtlessly, because my concern is that the easy availability of credit, the loans available at the point of sale, is tempting many people to borrow for things which they should not be. Okay. And that might lead them in a direction, because investment is postponed consumption, and borrowing is actually preponed spending. And that, I think, one should be extremely careful about. Right. And if these two things are sorted, I think most people will be financially independent and happy, and leading a very dignified financial life. So being numerate, methodical, thoughtful, and aware is the key. Borrowing, yeah, not Right. borrowing, or borrowing Right. thoughtfully. One should always borrow, but sometimes I'm unable to realize. I just fail to really understand that when somebody is able to roll over his credit card debt, the kind of interest that you incur on your credit card debt outstanding is the highest possible. No investment in this country has ever generated the kind of return, the interest that you incur. So if you are going to invest, and if you are carrying your credit card debt, by all means stop your investments and prepay that, because that is the wisest thing to do. Make sure one should actually use credit card for the convenience of it, Right. and one should use credit card for emergencies. If you bang your head, land in a hospital, then you by all means use your credit card, but don't use it for credit, for God's sake, because that is the kind of cost of borrowing which cannot be matched by any investment performance. सर जब आप बात कर रहे हैं कि बीइंग न्यूमरेट इज द की, मैंने भी सुना है कि आप एक बार ट्रेन लेकर एसबीआई के ऑफिस पहुंच गए थे. हाँ, ये बहुत पुरानी कहानी है. हुआ क्या था, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि मैंने अपने पेरेंट्स को परसुएड किया था कि आप इन्वेस्ट कीजिए, और उन लोगों ने इन्वेस्ट किया था मैग्ना मल्टीप्लायर स्कीम 1990 में, और 1992 में इसका बाजार में जो स्टॉक मार्केट में जो दाम था, ये 160 रुपया हो गया था पीक पे अपने. उस समय मुझे चिंता हुई, और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये 160 रुपया क्यों हुआ है. और ये पता करने के लिए, और जब किसी चीज़ का दाम नहीं पता हो, लगाया गया था 10 रुपया, हो गया 160 रुपया, 16 गुना बढ़ जाना. और
तो मैं इसके बारे में पता करना चाहा तो पता चला, मुझे पता ही नहीं चला उसका NAV क्या है, ये जानकारी नहीं मिली। ये जानने के लिए मैं एक बार बॉम्बे गया, और ख़ासकर मतलब इसी काम के लिए मैं बॉम्बे गया, और अपने पढ़ाई के फाइनल ईयर में के बाद, और वहाँ जा कर के जब SBI में मैंने पता किया तो पता चला कि इसका NAV 17 या 18 रुपया था। तो मुझे तुरंत मुझे पता चल गया कि एक 18 रुपये का चीज़ है जो 160 रुपये में बाज़ार में बिक रहा है, तो इसको तुरंत बेच देना चाहिए, क्योंकि जब लोगों को सच्चाई पता चलेगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 16 रुपये का चीज़ 20 रुपये में बिक सकता है, लेकिन 16 रुपये का चीज़ अगर लोगों को पता चलेगा कि 160 रुपये में बिक रहा है तो तुरंत इसका दाम धराशायी हो जाएगा। तो ये उस न्यूमरेसी का ही नतीजा था, ये क्यूरियोसिटी और न्यूमरेसी का नतीजा था कि आप सवाल पूछते हैं आप, और अगर आपको जवाब मिलता है तो आप उसको फॉलो अप करते हैं। इसी वजह से, इसी के आधार पे मैंने अपने पेरेंट्स को वो इन्वेस्टमेंट बिकवाया था, और इसी वजह से उनका ये मुनाफा रियलाइज़ हो पाया था। जिन लोगों ने ये नहीं किया, जिन लोगों ने इसके बारे में पता नहीं किया, उनका दाम 10 रुपये लगाया हुआ 16 रुपये का NAV वो 160 रुपये हुआ, फिर घट करके वो 15 रुपये भी हुआ। राइट सर, बेसिकली बीइंग अवेयर एंड गेटिंग टू नो एवरीथिंग is the formula that you take on, right? Being curious, right. Really ask question, why is this happening? If you actually ask question about the finfluencer or the Telegram channel that you are referring, that he's saying that, okay, double your money here in 3 months. Why will it happen? Why is it happening? How it can happen? What is going on? If you don't get a plausible explanation, if you don't get a reason, if you can't really make sense of that reason, don't get into it. तो आप शॉर्टकट नहीं लेते हैं, लेकिन सर क्या नहीं लेना चाहिए। लेकिन सर क्या आपने कभी भी FNO ट्रेडिंग की है, चुपके से कभी पैसे लगाए हों? आज तक मैंने नहीं किया, बल्कि मैंने सेबी के अलग अलग कमेटी में बैठ करके खूब शोर मचाया है कि ये एक बहुत बड़ा तमाशा है, और इसमें जो लोग कर रहे हैं और अब उसका नतीजा दिखना शुरू हुआ है। मैं लगातार पिछले 20 साल से ये कहता आया हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी अमीर ट्रेडर से मैं मिला ही नहीं हूँ, और अगर कोई, और ज़रूर कुछ अमीर ट्रेडर होंगे, लेकिन वो जो अमीर ट्रेडर है ना, वो सामने नहीं आते हैं, और ये झूठ बोलने वाले ट्रेडर बहुत सारे लोग आते हैं, और लोगों और कि यहाँ पे मेरा पैसा बना है, और जिनका नुकसान होता है वो बताते नहीं है कि मेरा नुकसान हुआ है, वो शर्मिंदगी होगी। तो ये मुझे लगता है कि, और ये एक ज़ीरो सम गेम है, यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता है। और FNO ट्रेडिंग में लोगों का पैसा नुकसान ही होगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि सारे लोग में मुनाफा और नुकसान अगर बढ़ जाए, तो जितना लोग बनाएंगे उतना, जितना जिसका बनेगा तो दूसरे किसी का नुकसान होगा। म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपनी बड़ी, छोटी कंपनी बड़ी होती है, बड़ी कंपनी जब बड़ी हो जाती है तो उसका दाम बढ़ जाता है। तो जिसने पहले लगाया था 10 रुपये पे आपने लगाया किसी, और उसने 20 रुपये पे बेच दिया, जिसने 20 रुपये पे खरीदा वो 25 रुपये पे हो गया। जो इक्विटी का जो स्टोरी है वो ये है कि सेंसेक्स का आविष्कार हुआ था 1978 में, उसका बेस था 100 और आज 82,000 पे है। ये 18.5% का सालाना रिटर्न है, और ये इस अवधि में 78 से लेकर के अभी तक जो 2024 में जो ये 100 रुपये से अगर आप इसको रुपया मान लें तो ये 80,000 पार करने का जो ये दौर है, इसमें इस सेंसेक्स की जो कंपोनेंट्स हैं, इसमें बहुत सारी कंपनियां मर गई। हिंदुस्तान मोटर इसका पार्ट हुआ करता था, MTNL पार्ट हुआ करता था, बहुत सारी बड़ी कंपनियां इसमें से गायब हो गई, मर गई, बंद हो गई, दिवालिया हो गई, कुछ बच रही हैं। जो बच रही हैं वो अब सेंसेक्स का पार्ट नहीं है। इसके बावजूद ये 100 का 80,000 हो जाना, ये इक्विटी स्टोरी है। लेकिन सर अगर आप शॉर्टकट भी नहीं लेते हैं, यू विल ऑलवेज न्यूमरेट ऑल्सो, तो क्या एज एन एक्सपर्ट या एज अ पर्सन ऑल्सो आपकी कोई बैड हैबिट ऑफ फाइनेंसेस नहीं है? कोई ऐसा कोई गिल्ट? ढेर सारी हैं, राइट, ढेर सारी हैं। मैं, और ये सारी गलतियां मैं शुरुआत के 5-7 साल में कर चुका हूँ। बल्कि कुछ चीज़ों का मुझे अफसोस भी है कि जैसे मैंने कभी कोई IPO में लगाया, कभी स्पेकुलेट किया। FNO मैंने नहीं किया है, और FNO शायद मैंने इसलिए भी नहीं किया है क्योंकि मुझे एक जानकारी हो गई थी कि ये कैसे काम करता है और क्यों इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका नुकसान 100% हो सकता है। इक्विटी इन्वेस्टिंग का एक फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास पड़ा रहेगा तो हो सकता है कि कुछ नुकसान हो जाए, लेकिन FNO में जो आपका नुकसान होता है वो परमानेंट हो जाता है, आपको स्क्वायर अप करना पड़ता है। तो नहीं, शुरुआती स्पेकुलेटिव IPOs, लगाया हुआ पैसा मेरी सबसे बड़ी गलती रही है
कि एक बार 2008 में मैंने घबराहट में अपना लगाया हुआ अच्छे फंड में पैसा, जब बाज़ार पूरा धाराशायी हो गया तो मैंने बिल्कुल निचले स्तर पे अपना निवेश बेचा है, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है कि अगर मैं नहीं बेचता तो शायद वो पैसा 5 गुना हो गया होता अगले 1.5 साल में, और वो जो मेरा नुकसान हुआ वो नुकसान परमानेंट नहीं होता। तो ये मैं जो लोगों को बताता हूँ उसका पालन मैंने खुद नहीं किया था क्योंकि वो रकम बड़ी थी। जी। So lastly we will do a cash quick fire, sir. You will have to answer in one word. My first question is stock market or mutual funds? Mutual funds. SIP or lump sum? SIP. Long term investment or short term gains? Long term investment. Gold or real estate? Real estate for living. What's your go to budgeting tip? Do a budget. One financial book everyone should read. One Up on the Wall Street. You'll really understand how markets work. One movie related to money that you would recommend? There are just too many of them, but you know, the big shot. The Big Shot. Right. Yep. Savings account or fixed deposit, if you have to choose one? Just savings account, no fixed deposit. All the fixed deposit money should be invested appropriately. Right. One word to describe your investment philosophy? Long term, high quality. A common spending mistake people make? Impulse spending. What's Impulsive your- spending. Right, right. What's your guilty pleasure spending? Some of those, you know, impulsive spends which I regret later. Is it on food or traveling? Anything you spend too much on? I have this, you know, I spend a lot on books, and many a times based on reviews, based on recommendations, I buy that book, and then the way I actually cut short my losses is that if I don't like that book, I don't spend more time on that. We hope you have got insightful tips from Mr. Dhirendra Kumar himself. If you have any more questions, queries related to your wallet and finance, you can write to us and you can subscribe to Republic Money and you will get all your answers right here on Republic Money.